Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to understand few important terms in the Indian economy. Now this series that I have started is going to help you a lot in your upcoming preliminary examination. ये series आपको आपके prelims के examination में काफी help करने वाला है. So this series is important economic terms for UPSC CSE and we are going to cover most important topics in Indian economy daily from the prelims perspective, and at the end of every class we are also going to solve questions, 4 questions. Okay, क्लास के एंड में, हर क्लास के एंड में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे ताकि आपको आपका जो आप पढ़ रहे हो ना वो स्ट्रांग हो जाए. ठीक है, सो दैट वॉट एवर यू आर स्टडिंग इट बिकम्स स्ट्रांग. ऑल राइट, चलो. सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद द क्लास. उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग रेडी हो क्लास के साथ. So let's start. Also, class PDF will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can download it directly from there. Okay, chalo, let's begin. So we are going to cover the important terms in this manner, in a flowchart manner. So first, देखो, national income जो है, it has many components. We have gross domestic product, we have gross national product, we have gross national income, we have net national income, right? We have personal income, etc. तो यहाँ पर हम GDP, GNP, then GNI, then national domestic product, then NNP and NNI, we are going to cover one by one all of these. Okay. When we talk about national income, what is national income? It is the value of good and service produced by a country during a financial year. That is known as, that my dear, is national income. उसको हम बोलते हैं national income. I hope इतना point clear हो गया है. ठीक है, what is national income? पूरा जो goods और services हमने एक country में financial year के दौरान बनाए हैं, उसका net result जो होता है economic activities का एक country में during one year of period, that is national income. Okay, point clear हो रहा है सभी को? So you can also write over here that it is the net result of all economic activities. Of all economic activities, उसका जो net result होता है उसे हम national income बोलते हैं. These economic activities, they have taken place in a particular year. Okay, that is national income, and it is calculated or it is computed using the formula GDP equals consumption plus investment plus government spending plus exports minus imports. तो all of this formula we are going to study today. ये सारे formulas हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, let's start. And now before we move further in the national income topic, you should remember that national income is an uncertain term and it is often used interchangeably with national dividend, national output and national expenditure. ओके, एक अनसर्टन टर्म है, तो इसके प्लेस पे हम नेशनल डिविडेंड भी वर्ड यूज कर देते हैं, नेशनल आउटपुट वर्ड भी यूज कर देते हैं, नेशनल एक्सपेंडिचर वर्ड भी यूज कर देते हैं. ठीक है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. Unacademy has launched Unacademy Mega Subscription Offer. तो UPSC CSE का आपके लिए एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर Unacademy लेकर आया है. Now here, what is this offer all about? This offer first of all is valid till 31st March 2021. उससे पहले अगर आप 1 year का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा. Now what is there in this offer? If you take 1 year subscription before 31st March 2021, then your subscription, you all know, अगर 1 year का subscription लिया है, that means you have taken 31st 3 2021. Let's suppose you have taken the subscription in this particular time period. It will be valid till 31 3 2022, right? ये normal है. But under this mega subscription offer, you will be given 4 एक्स्ट्रा मंथ्स टाइम ऑफ एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन. आपको 4 महीने का एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा सब्सक्रिप्शन का. ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन ऑफर के अंदर. और प्रीलिम्स 2022 whichever is later, यानी कि जुलाई 31st 2022 तक को आपको सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन मिलेगा ही मिलेगा. अगर प्रीलिम्स बाद में होता है, मान लीजिए अक्टूबर में या अगस्त में हो जाता है, ठीक है, तो आपको पोस्टपोन हो जाता है. जस्ट लाइक लास्ट ईयर प्रीलिम्स गॉट पोस्टपोन्ड इन 2020. इफ इन 2022 प्रीलिम्स गेट्स पोस्टपोन्ड, देन योर सब्सक्रिप्शन विल बी एक्सटेंडेड टिल प्रीलिम्स 2022. समझ आ रही है बात? तो 4 मंथ्स एक्स्ट्रा तो आपको मिल ही रहे हैं सब्सक्रिप्शन में अगर आप 1 ईयर का लेते हो 31 मार्च से पहले, प्लस अगर प्रीलिम्स बाद में होता है, पोस्टपोन हो जाता है, तो प्रीलिम्स 2022 तक का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है. सो विच एवर इज लेटर, जुलाई 31st 2022 और प्रीलिम्स 2022, विच एवर इज लेटर, you will be getting your extended subscription for that period. Okay, and under this we have launched new batches also which have already started from yesterday.
राइट कल से ये नए बैचेस स्टार्ट हो गए 2022 एंड 23 के एंड एनसीईआरटी बैचेस हैव आल्सो स्टार्टेड राइट सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग these subscriptions the link is given below in the description box go to the link click on it and use code arpita10 to get 10% discount on your plus subscription आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% का एकदम डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हो arpita10 ठीक है सो गो सब्सक्राइब टुडे इट्स अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट इज लास्टिंग टिल 31 मार्च 2021 ओनली सिर्फ 31 मार्च तक है ये ऑफर आपके पास तो इसको मिस मत कीजिएगा ठीक है So let's start with gross domestic product. Gross domestic product से start करते हैं तो gross domestic product is a total value. Underline this. It's a total money value. अब कौन सी value है? Money value है of the final goods and services, not intermediate goods and services, not raw goods and services. Final. I am highlighting the most important words. Okay. Total money value of final goods and services which are produced in the economic territories of a country in a given year. So it should be produced within the economic territories of the country in a given year. एक financial year में economic territories के अंतर्गत अंदर total good final goods and services जो बने हैं उसकी total money value जो होगी वो GDP में वो GDP कहलाई जाएगी. So total value of goods and services produced in India for 14-15 is projected to be around 100 lakh crore Indian rupees or around 2 trillion US dollars at current market price. So this is the or 100 lakh crore Indian rupees will be the GDP. ठीक है समझ आ रही है बात? So GDP stands for total value of goods and services produced inside territory of India irrespective of whom produced it. यानी कि जो कोई भी प्रोड्यूस करे चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो किसी ने भी प्रोड्यूस किया हो इंडियन टेरिटरीज के अंतर्गत है तो वो जीडीपी में काउंट होगा ठीक है पॉइंट क्लियर हो रहा है दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स दीज first and the last definition is important so there are different components in GDP we have total demand for domestic output ठीक है that is GDP ये y जो जाएगा वो GDP हो जाएगा it is composed of this is composed of consumption ठीक है then we have investment then we have government purchase of goods and services and then we have net exports that means import minus export जो होगा वो net exports आ जाएगा consumption plus investment plus government purchases plus the net exports or net foreign demand it is also known as net foreign demand ठीक है import minus export करोगे वो NX में काउंट हो जाएगा that is GDP इन सब को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा total demand for domestic output that is GDP so you can also say that GDP is your private consumption that is C लोग जो कंज्यूम करते हैं जो खर्चा करके कंज्यूम करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ठीक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैन बी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी होता है दैट इज नॉन रेजिडेंशियल एंड रेजिडेंशियल एंड इन्वेंटरीज वॉट एवर स्टॉक्स यू आर परचेजिंग देन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस NX that is exports minus imports okay and that that is how you get your GDP इस तरीके से आपको आपका मिल जाता है यहाँ पर GDP okay this is very easy GDP का concept बहुत easy है here irrespective of the fact who is producing it right whether foreigner or resident you have to calculate or compute or take into account total value money value of goods and services which is produced in the within the territory of the country okay then we have GNP that is gross national product now what is gross national product now GDP पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि GDP included है GNP में how do you get your GNP can be calculated by adding net factor income from abroad into GDP okay so it is a measure it is another measure for national income of the country first was GDP एक और measure है किस तरीके से आप national income को measure कर सकते हो वो GNP से कर सकते हो देखो Indian economy is not closed economy as we all know ठीक है तो it is not closed economy but it is an open economy after 1991 the closed economy tag was removed so India has transactions with the rest of the world also हम देखो ऐसा तो नहीं है closed economy है बाहर से भी हम transaction करते हैं export होता है import loans होते हैं etc because of which it gave rise to the concept of national or domestic income जिस वजह से हमें national income या domestic income का concept मिलता है okay so in case of GDP we calculate the market value of all final goods and services produced within the country underline this हम GDP में ना market value calculate करते हैं final goods and services की and it may be the case that resident of India work and earn in some other foreign countries also
ऐसा तो होता है ना, वी हैव एनआरआईज, इंडिया के रेजिडेंट है, बाहर के कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग एनआरआईज नहीं होते बट बाहर थोड़े टाइम पीरियड के लिए जाते हैं कमाने, राइट। सिमिलरली कन्वर्सली दैट इज ऑपोजिट वे में, सम प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस विद इन द कंट्री मे बी एट्रीब्यूटेड टू टेम्पररी एंड सीजनल फॉरेन लेबर, कुछ समय के लिए बाहर के लोग यहाँ आके कुछ प्रोडक्शन करते हैं या काम करते हैं। So this is measured by gross national product. So it is measured as GDP, that is within the territory, whatever is the final value of goods and services, plus net factor income from abroad, ठीक है। NFIA जो आपका net factor income होता है abroad से, उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। that is how you will get your GNP. Now how do we get the net factor income from abroad, because the word over here is net. ये कैसे मिलता है? It is income earned by domestic factors of production employed in the rest of the world minus factor income earned by factors of production. What are factors of production? It is land, labor and capital. यही होता है ना factor of production. You must have studied this in class 12th economics. Land, labor, capital is factor of production. So income earned by domestic factor of production, that is within India, employed by rest of the world, minus factor income earned by factors of production of rest of the world, which is used in the domestic economy. For example, in India के case में net factor income from abroad will be income earned by Indian resident in foreign countries minus income earned by foreign resident in India. Indian resident है, मान लीजिए ये हो गई मैं अर्पिता, मैंने बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो भी इनकम अर्न करी, माइनस मान लीजिए वहां से आते हैं पॉल, ठीक है, अमेरिका से पॉल आते हैं, वो इंडिया में जो भी अर्न कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे, इससे हमें मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको यहाँ पर? सो अनदर एग्जांपल कैन बी दैट profits earned by Chinese company Xiaomi by selling smartphones in India will not be included in GNP of India. It will be included in China's GNP. Profits earned by ONGC Videsh from its subsidiaries in America or you can say China, it will be included in GNP of India. Point clear हो रहा है यहाँ पर सभी को? That is net factor income from abroad and that is how it is added into the GDP. And then we get GNP. Now the next important term is that is net domestic product. Now net domestic product, or we call it NDP in short, it is GDP minus depreciation. Here the concept of depreciation is important to understand for the non-commerce background students. What do you understand by depreciation? The wear and tear in value. Depreciation क्या होता है? जो wear and tear होता है ना वैल्यू में, उसको depreciation बोलते हैं, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज ज्योग्राफिक बॉर्डर्स and it is considered as a very important indicator of economic growth of the country. This point is important for prelims. हमारी कंट्री का की इंडिकेटर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का? वो है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग और रिमूविंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ नेशन. कैपिटल एसेट मीन्स योर मशीनरीज, अदर इक्विपमेंट्स, उनकी वैल्यू में जो घटाव होता है समय के साथ, जो घटती है उनकी वैल्यू, उसको निकाल देंगे अगर हम टोटल इनकम से, टोटल जीडीपी से, तो हमारे पास क्या निकलेगा? एनडीपी निकलेगा, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड गुड फॉर एन इकोनॉमी इफ गैप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी इज नैरोअर. जितना कम गैप होता है ना जीडीपी एनडीपी के बीच में, उतना ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज ये इकोनॉमिक बैलेंस दर्शाता है. इफ द गैप इज वाइड दैट मीन्स देयर इज वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ऑब्सोलेसेंस, राइट. वियर एंड टियर की वैल्यू काफी ज्यादा हो रही है, वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स दैट इफ द गैप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी इज नैरोअर दैट इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी. If it is wide, that is bad for the health of our economy. Okay. Then we have the net national product. Net national product is calculated at market price. तो मार्केट प्राइस पे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इट इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जीएनपी ओवर हियर, ठीक है. यहाँ हमने जीएनपी पढ़ लिया था, विच वाज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, तो यहाँ पर it will be GDP plus net factor income from abroad minus depreciation. That is how you will get your NNP, that too at market price. Okay, so we have discussed depreciation. It is the wear and tear. It is known as depreciation, the value of a capital asset when it decreases. That is depreciation. Okay, so net national product is total value of finished goods and services produced by country's citizens overseas, underline the word overseas, and domestically also over a time period
विदाउट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि वी आर एलिमिनेटिंग डेप्रिसिएशन ना, तो डेप्रिसिएशन को कंसिडर किए बिना, ठीक है, जब हम देखते हैं एनएनपी तो वो फैक्टर कॉस्ट पे हो जाता है. देन इफ वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी वी गेट एनएनपी. जीएनपी से जब डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं हम तो हमारे पास एनएनपी आ जाता है. पॉइंट क्लियर होगी. तो वो टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज है जो ओवरसीज भी और डोमेस्टिकली भी डेप्रिसिएशन को कंसिडर किए बिना हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, डेप्रिसिएशन को हम अकाउंट में लेते ही नहीं है, तब हमें मिलता है एनएनपी. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. उम्मीद करती हूँ इतना पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल इनकम. अब समझते हैं थोड़ा सा पर्सनल इनकम को. पर्सनल इनकम इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स. हाउस होल्ड्स जो भी नेशनल इनकम को रिसीव करते हैं वो पर्सनल इनकम है. ठीक है, दैट कैन बी नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ओके, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड, minus corporate tax, plus transfer payment to household from government and firms. That will be your personal income. यानी कि ये सब हटाने के बाद जो बचता है आपके पास वो आपकी पर्सनल इनकम होती है. ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग कॉर्पोरेट टैक्स, बाय पेइंग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, लोन इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, सब कुछ हटाने के बाद, ट्रांसफर पेमेंट्स हटाने के बाद जो पेंशन वगैरह होती है ना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? ठीक है, पेंशन पेमेंट्स, रिलीफ पेमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स. सो which is given to the households by the government and firms. So when we deduct all of these, the net income that stays with you, that is your personal income. Okay, point clear? So now let us solve some questions and then we'll close class 1. Consider the following actions which government can take: devaluing the domestic currency, reduction in export subsidy, adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from FIIs. Which of the above action or actions can help in reducing the current account deficit? Current account deficit को reduce करने में कौन से actions हैं जो help करेंगे? You have 10 seconds time to answer the question. Here you should understand what is current account deficit. करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. बेसिकली इट इज अ मेजरमेंट ऑफ कंट्रीज ट्रेड वेयर वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इंपोर्ट्स एक्सीड्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स इट एक्सपोर्ट्स. जितना इंपोर्ट करता है ना कंट्री वो ज्यादा है एक्सपोर्ट से, उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट बोल देते हैं. सो हियर करेक्ट आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, question number 2 came in 2011's prelims question paper. In context of Indian economy, consider the following statements. Growth rate of GDP has steadily increased in last 5 years. Growth rate in per capita income has steadily increased in last 5 years. Which statement is or are correct? कौन सा statement correct है फटाफट से बताएं. 10 seconds time. All right, so the correct answer to this question is, it is statement 2. Okay. Question number 3. In India, which of the following have highest share in disbursement of credit to agriculture and allied activities? 2011 का प्री का question है. Commercial banks, cooperative banks, RRBs or microfinance institutions. You have 5 seconds time to answer the question. Correct answer to this question is, it is A, commercial banks. Highest share in disbursement of credit that goes to commercial banks. RRBs are limited to rural areas. Microfinance are limited to MSMEs. Agriculture allied की जब आप बात करते हैं, it is commercial banks. Okay, it is limited to SHGs. Okay, last question for today. Which of the following is not a feature of value added tax? Value added tax का जो कि अब हट चुका है, इस कौन सा स्टेटमेंट इसमें फीचर नहीं है VAT का? It's a multi-point destination-based system of taxation. It's a tax levied on value addition at each stage of transaction in production distribution chain. It's a tax on final consumption of goods or services must ultimately borne by customer. It's basically a subject of central government and state governments are only a facilitator for its successful implementation. You have 10 seconds time to answer the question. वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें देखो पूछा गया नॉट अ फीचर. ठीक है, क्या इसमें से फीचर नहीं है? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इट इज ऑब्वियसली सी. इट्स अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम. करेक्ट. वैल्यू एडिशन पे चार्ज होता है. करेक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है. करेक्ट. सी इज नॉट द फीचर. ओके,
Last question for today. ये question का answer I have already given. Closed economy is an economy in which neither export nor imports take place. That is a closed economy. Okay. So this was all for today. ये थी आपकी आज की class. I hope you enjoyed this class. If you really enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe the channel. Share this video with other aspirants as well in order to also help them ease their journey. Thank you and have a wonderful day ahead.